तो जैसा कि मैंने बताया था, रन टाइम मेमोरी एलोकेशंस में 4 फंक्शंस होते हैं, malloc, calloc, realloc एंड फ्री फंक्शन। तो जब सबसे पहले हम बात करते हैं malloc फंक्शन की, तो इसका जो pointer variable equals to typecasting malloc number of elements asterisk size of elements। तो इस फंक्शन जो होता है वो ब्लॉक ऑफ मेमोरी बाइट्स में अलॉट करता है। ये फंक्शन रैम से रिक्वेस्ट करता है फॉर द एलोकेशन ऑफ द मेमोरी। इफ द रिक्वेस्ट इज ग्रांटेड it returns pointer to the first block of that memory. However, if the request is not allotted, that is denied, then it will return a null value. And जो by default value होती है वो garbage value होती है malloc function की। malloc function 64 KB memory allot कर सकता है at a time, or if you want to allot more amount of memory, then you have to use for malloc function, which is up to 128 KB at a time. The second function is calloc function, and it is pointer variable equals typecasting calloc number of elements comma size of elements. The difference between the two is here there is an asterisk sign is used, and here there is a comma is used. Calloc chooses the continuous memory allocation. Similar होता है as malloc, but ये हमारा calloc function continuous memory allocate करता है, whereas malloc discontinuous memory allocate करता है। While malloc function is faster than calloc function, and this function is also of 64 KB, and long calloc is of 128 KB. Next is the realloc function. Realloc function void asterisk realloc pointer value, that is the old address of the array and the new size. There are several outcomes with this realloc function. If sufficient space exists to expand the memory block in the additional memory is allocated, then the function is returns the same value. मतलब जो हमारा नया बड़ा वैल्यू है, अगर वो सफिशिएंट ब्लॉक उसी जगह पे वापस पाया जाता है, स्पेस मिल जाता है उसे, तो वो रिटर्न करेगा सेम पॉइंटर वैल्यू। इफ़ इनसफिशिएंट स्पेस डज नॉट एग्जिस्ट, अगर उसी जगह पे एग्जिस्ट नहीं करता है, तो वो न्यू ब्लॉक फॉर न्यू साइज इज अलोकेट, एंड एग्जिस्टिंग डेटा जो है वो कॉपी हो जाएगा फ्रॉम ओल्ड ब्लॉक टू न्यू ब्लॉक, एंड एडिशनल ब्लॉक इज मेड, और जो ओल्ड ब्लॉक है फ्री हो जाएगा फ्रॉम न्यू ब्लॉक। इफ द मेमोरी इज इनसफिशिएंट फॉर द रीएलोकेशन, द फंक्शन रिटर्न्स नल वैल्यू, द ओरिजिनल ब्लॉक इज अनचेंज्ड। यहाँ पे ओरिजिनल ब्लॉक अनचेंज्ड होगा क्योंकि उसे कहीं पे भी जगह नहीं मिली है। Void asterisk realloc null comma 100, then the function will act like malloc parameter, but there are like and the fourth one is free function. तो जैसा कि जो मेमोरी एलोकेट होती है कैलॉक मैलॉक रीलॉक से, ये अपने आप डिस्ट्रॉय नहीं होती, तो वी हैव अ फ्री फंक्शन that is free pointer value. Then there is a question that what is memory leakage? If the user fails to free the memory allocated by malloc or calloc, then this situation is known as memory leakage.
क्योंकि next time you are not able to change that block or you cannot destroy that block. And if you are making new programs, you need space. So it's compulsory to use free function if you are using calloc or malloc function.